Hey, so let's look at Bank Nifty. I think it was a very easy day today. Why? If you've checked my post-market analysis, I had mentioned it. I've been mentioning it from last 1 week. Don't trade anything till it is in this box, and I'll only look for short below this. So first candle, 1 hour candle gave you a entry, and below this it almost gave you 100 points. And this also I had mentioned very clearly in probably almost all my post market videos that this is a very good support, 17855. And even in this kind of a market, this support was holding. So that was the reason I exited in the morning from here. Why did I short it? Because it closed below 18,000 for an hour candle, and the next candle gave a follow up. My stop loss will was anything above 18,000, and my target, it did trail, but I mostly exited here. Why? Because this again is a very good support. And then in the afternoon, I gave a trade on TradingView at 2 o'clock, which was basically shorting Nifty. Let me just open the layout. Which was basically sell below 2, stop loss 2 high. So this also almost gave 1:1 on an expiry day, which is huge, because anything above this goes to zero. And why did I give this trade? This was my reference: sell below 2 o'clock high. And if you look at 2 o'clock, can 2 o'clock low, it is basically the same point where it gave you a huge sell last time around 11 o'clock. So, and I also got a view in Bank Nifty, which I didn't really share. At 2 o'clock, same sell around 2:15, which is this reference. What are these reference? I can't really tell you, but these are my systems. So I got a sell around 215, which almost gave 200 points on an expiry day. So if you check 42,800, 41,800 here, it was around 125. Stop loss was too high, so that was around, I think, 20 points in 41,800 call. If you're selling 41,800 call, 20 30 points gives you almost 1:5, 1:4 reward. So go and follow me on TradingView, and I'll be posting these ideas every day. And to get the logic, you won't really understand the logic sometimes, because it usually comes from my system. But I'm giving it for free. I'm not charging you. I'm not selling you. I've been doing this for a year on YouTube. You can also go and check my channel. So coming to positional, I still want a closing below this to go positionally short, but I can always play intraday when this is closing below 18,000. But yeah, positionally, I still want this to close below this, and then I can expect around 17600 levels, which I've been telling you in all my post market videos, which I've been posting. तो बैंक निफ्टी देखते हैं, आज तो बहुत सही अच्छा दिन था। क्यों? क्योंकि अगर आप मेरा पोस्ट मार्केट वीडियो फॉलो करते हैं, तो मैं एक हफ्ते से बोल रहा हूँ कि ये जोन में मैं शॉर्ट नहीं करूँगा। ये जब तक कैंडल, 1 आवर कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं होता, मैं शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और 1 आवर कैंडल ने क्लोजिंग दी इसके नीचे, और फॉलो अप मिला सेलिंग का इसके नीचे, और स्टॉप लॉस हो जाता है मेरा ये 18,000 के ऊपर कोई भी कैंडल स्पॉट में। और आज एक्सपायरी थी, तो आप हीरो ज़ीरो खेल सकते थे। और यहाँ पे मैं क्यों एग्ज़िट किया इसके आसपास, क्योंकि हर वीडियो में मैंने ये भी बोला है कि मेरा जो नेक्स्ट सपोर्ट है, जो बहुत अच्छा सपोर्ट है, वो है 17,855। हर पोस्ट मार्केट वीडियो में मैंने बोला है, आप जाके चेक कर लीजिए। 17,855 हर पोस्ट मार्केट वीडियो में ये लाइन मार्क्ड है, सिर्फ आज नहीं मार्क किया मैंने। तो इसीलिए यहाँ पे मैं एग्ज़िट कर लिया था इसके आसपास, एग्जैक्ट पॉइंट पे तो नहीं। तो उसके बाद मैंने सेकंड हाफ में मैंने ये पोस्ट वीडियो आइडिया मैंने डाला है ट्रेडिंग व्यू चैनल पे 130 के आसपास या 145 के आसपास, वो भी आप टाइम चेक कर लीजिए। जहाँ पे मैंने बोला है कि निफ्टी का अगर लो टूटता है 2 o'clock का, तो मैं सेल करूँगा और ट्रेल करूँगा स्टॉप लॉस। मुझे उसने 1:1 ट्रेड दिया, वो भी एक्सपायरी डे पे। 2 o'clock के ऊपर जो भी ऑप्शंस थे वो सारे ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लोज हुआ है। और दूसरा, कोई भी आप ऑप्शन बेचते वो सब प्रॉफिट होता। 2 o'clock का हाई स्टॉप लॉस लगाना था सिर्फ। और बैंक, ये मेरा रेफरेंस था निफ्टी के ट्रेड के लिए।
सॉरी, ये मेरा रेफरेंस था निफ्टी के ट्रेड के लिए। रेफरेंस क्या है ये मैं बता नहीं सकता, ये मेरे सिस्टम से आता है। लेकिन ये 2 o'clock नीचे सेल था और 2 o'clock का स्टॉप लॉस, हाई स्टॉप लॉस था। अगर आप इसको 3 मिनट में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वही पॉइंट है 2 o'clock, जहाँ पर पहले ये यहाँ से गिरा है बहुत अच्छे वॉल्यूम से। तो ये वो अगर आप 3 मिनट में आके देखते हैं तो यहाँ भी सेम चीज़ हुआ। और अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो भी मेरे को ये मैंने दिया नहीं था, लेकिन यहाँ भी मुझे 215 पे सेल आया था, जो कि ये है रेफरेंस बैंक निफ्टी का। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो और स्टॉप लॉस था 2 o'clock हाई। तो यहाँ पे देखेंगे तो उस टाइम बैंक निफ्टी चल रही 41,860, 41,800 का कॉल चल रहा था, 120 शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और 41,800 का कॉल का स्टॉप लॉस था, 2 o'clock का हाई जो चल रहा था 150 शायद, 150 155, तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 120 पॉइंट्स मिल जाते हैं इसमें। तो 1:4 हो गया ऑलमोस्ट। ये मैंने नहीं दिया, लेकिन मैंने निफ्टी दिया था। और ये तो मैं हर वो और ये ट्रेड तो मैं जो सुबह मैंने ट्रेड लिया था, वो तो मैं हर पोस्ट मार्केट वीडियो में बोल रहा हूँ आपको। तो इसलिए मुझे जाके ट्रेडिंग पे फॉलो करिए। मैं कोई कोर्स नहीं बेचता, मैं कोई ट्रेड नहीं देता, सब फ्री देता हूँ। 15 मिनट पहले हम देता हूँ और 1 साल से देते आ रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे अपने। आप जाके चेक कर सकते हैं और आप ये भी चेक कर सकते हैं। लास्ट ईयर मैंने फर्स्ट या फर्स्ट सेकंड का जो हमारा बजट था, उसमें भी मैंने क्या ट्रेड दिया। तो वो सब मेरे उसमें, और सारे विन्स जितने भी विन्स हुए हैं वो सब शॉर्ट्स में है मेरे चैनल पे। और ये क्या कहते हैं, हाँ, पोजिशनली अब मैं देखूंगा तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी भी सेल के लिए, जब तक इसके नीचे एक 1 आवर क्लोजिंग नहीं आती। मेरा टारगेट अभी भी सेल का है 17,600 स्पॉट में। जब वो आ जाएगा तो फिर मैं शायद ना देखूँ सेल की तरफ, मैं सिर्फ बाय की तरफ देखूँ फिर। पर देखते हैं। थैंक यू।